पे चर्चा अगले शो में होती रहेगी और डिटेल में। अपना इस शो का बेसिक प्रमाइस मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत। जगन्नाथन चक्रवर्ती सर को वापस स्क्रीन पर लेकर आइएगा, सोनाटा सॉफ्टवेयर के सीएफओ। नतीजा आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नतीजों से पहले जगन्नाथन सर, एक आईटी सर्विसेज कंपनी जिसके लिए ज्यादातर हम लोग इसको ट्रैक करते हैं, मतलब एनालिस्ट फ्रेटर्निटी, पर विद अ डिफरेंस, क्योंकि आपके में डोमेस्टिक एक्सपोजर भी बड़ा है और वो लार्जली शायद प्रोडक्ट्स का है। 67% Q2 के रेवेन्यूज उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिजनेस से आए थे। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिजनेस दरअसल है क्या? Yeah. So I'll take good afternoon all. Thanks for this opportunity. We have two businesses, two totally different businesses. One is international services. International services is a typical software company, and the other one is domestic redistribution business of licenses. At present, the domestic redistribution business has some $750 to $780 million of turnover. But we have been telling this business has to be measured not on turnover for the sake of accounting, for the sake of statutory requirement. We do consolidate these two, but these two businesses are two different businesses. The domestic business has to be measured on absolute amount of gross contribution, how much it comes from that. For example, this quarter, the gross contribution from this business was 70.2 crore. So that is the measurement of the business, and we have to track how much of the gross contribution, absolute amount of gross contribution is growing year on year. This will help us to address the questions of the business. It's a different kind of business because the product cost is also high and margin is low. We always track this business on absolute amount of gross contribution. That's what I want to mention. In case of international लाइसेंसेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो इसीलिए Q2 में, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्जिन्स वेफर थिन होंगे, लो सिंगल डिजिट होंगे। लास्ट क्वार्टर में 3.3% के आसपास के मार्जिन्स थे और इस बिजनेस को एक्चुअली देखना चाहिए साल दर साल 18% ग्रोथ। Yes, the gross contribution amount is growing very fast. For example, if I have 100 crores of profit gross contribution this year, we promise that next year it will be 10 to 12% more, means 112 to 115 crores, it will be more. 12 to 15%. So this actually is the measurement what you have to track the company. The company, that domestic redistribution business, take the absolute amount of cost contribution. If it is growing between 12 to 15%, then the growth has been very good. So that's how we have to track this business, domestic business. The other one is software business, which is like any other. वो तो हाँ, उस पर तो मैं आऊंगा डिटेल में, क्योंकि वो तो आप सब ट्रैक करते हैं। इसीलिए एक प्लेट दिखाई दी डायरेक्टर साहब आपने, क्वार्टरली रेवेन्यूज क्यू ऑन क्यू किस तरह का वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसीलिए क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस आपका एराटिक है, क्योंकि 2/3 70% के आसपास प्रोडक्ट बिजनेस से है। तो Q4 में रेवेन्यूज 12% गिरे, Q1 में रेवेन्यूज 15% उछले, इस बार Q2 में रेवेन्यूज 14% गिरे। तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट बिजनेस की वॉलेटिलिटी है। क्यू ऑन क्यू नहीं देखना चाहिए, साल दर साल देखना चाहिए। इसलिए सोनाटा के एब्सोल्यूट नंबर्स, कंसोलिडेटेड नंबर्स को ऐसे देखना गलत होगा, है ना? Exactly. You understood. You really articulated correctly. This business has quarter-on-quarter oscillation. Don't see the revenue at all. It has nothing to do with gross contribution. Depending on a particular contract closure, particular product, what we redistributed, we may increase the gross contribution quarter-on-quarter, but revenue may increase or decrease. So please don't measure it on that. Don't see the revenue at all. It is not for you. So please track only the absolute amount of gross contribution from this business. तो फिर ये दोनों, इन दोनों में कोई सिनर्जीज हैं क्या, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिजनेस में? अदरवाइज फिर ये दोनों एक कंपनी में क्यों रखे हुए हैं? Yes. The reason why these two businesses are there, although it is a fully owned subsidiary, domestic business is done through subsidiary company. Why this is together is, one, we have a partnership with Microsoft. Microsoft, we need to have 360-degree relationship. The relationship is measured as sell to Microsoft, sell with Microsoft, which is part of international business. And there's one more component in the relationship called sell for Microsoft. That is our domestic business. For that relationship, 360-degree relationship to be maintained, we have to, these two businesses come in the same company. But that is a separate business. This is a separate business. परफेक्ट। अच्छा, अब आते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस पे। इंटरनेशनल
1.5% क्यू ऑन क्यू कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में Q2 में आपने ग्रोथ दिखाई। दरअसल ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट कैसा शेप अप कर रहा है सर? कुछ कॉन्फिडेंस, जिन सीईओज, जिन सीटीओ से आप बातचीत करते हो, फोन पे उठा के चर्चा होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? Yeah. So it depends on the vertical, depend on the customer. There are verticals like banking, BFS is doing well for us. There is a healthcare vertical is doing well for us. We expect these two verticals to continue to do well for the next couple of quarters. The other vertical, high tech partially the largest customer for us in high tech, they were doing well and they may have some softness. And high tech as a vertical is also soft now. And retail is very soft. That's a major vertical contributing about 30% of my revenue. That is very, very soft. It will take time for retail to bounce back, and it will take a couple of more quarters for us to see any positive green shoots in retail. High tech, it is soft now. It may also take a couple of quarters for it to bounce back. But two verticals, healthcare and banking financial services, is doing well for us. So it depends on which vertical you are talking about, which you are talking about. The geo in US is doing well. UK, Europe is soft. ANZ is doing well. So it depends on which geography and which vertical we are talking about. अच्छी बात कि आपका 72% रेवेन्यू Q2 का अमेरिका से आया, तो बढ़िया कंट्रीब्यूशन वहां से। लेकिन दिक्कत दूसरी, आपने सही कहा, बीएफएसआई एज अ स्पेस अच्छा कर रहा है, पर बाकी कंपनीज के लिए बीएफएसआई का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। सोनाटा का बीएफएसआई कंट्रीब्यूशन इज ओनली 22%। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई मीडिया, टेलीकॉम, टेक वर्टिकल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, और ट्रैक्शन इस समय बीएफएसआई का तूल पकड़ा हुआ है। तो सोनाटा के लिए आउटलुक थोड़ा सा वीजा भी बाकी आईटी कंपनी थोड़ा सा ठंडा है क्या, ऐसा है क्या? नहीं है। What is that is for us, the BFSI was only 7 to 8% 2 years back. We are from 7 to 8%, we have grown to 22% in just 2 years' time. So we are investing in BFSI. BFSI and healthcare is our invest vertical. We continue to invest and grow the BFSI vertical. Our acquisition, the quant system, contribute to a major extent. They brought the customers in BFSI as well as healthcare. So we are doing very well and we are growing very fast. The other companies already have a BFSI more, but we are increasing the BFSI share now, and that will help us to compensate the growth challenges in high tech and retail vertical. अभी यूएस की चर्चा छिड़ गई, डिमांड एनवायरनमेंट की जगन्नाथन सर बातचीत हो रही है। एक बड़ा चेंज हुआ है, पिछले ही हफ्ते हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब की वापसी। अब ये ट्रंप साहब का कह लीजिए ट्रंप 2.0 कैसे देख रहे हो आप लोग? क्या आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ट्रंप साहब के अंदर आईटी के आउटलुक को लेकर, इंडियन आईटी के लिए, या समय चैलेंजिंग आने वाला है? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप साहब का जो ट्रंप 1.0 था उसमें वीजा की सख्ती, वो H1B वीजास पे रोक, वो इमिग्रेशन को लेकर लफड़े, वो सब हुए, पर साथ में वो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। इस बार भी ऐसे ही कुछ होप्स खिंची हुई हैं। तो नेट नेट ट्रंप साहब की वापसी पॉजिटिव है इंडियन आईटी के लिए, नहीं है? It is too early to comment about Trump and what will be the administration will do, US administration will do. Too early for that. We have to wait and watch his reaction, his policy announcement and other changes. We will know what is exactly it will have an impact for us. But there are positives to this. One is the uncertainty about the political uncertainty, what it carried for this time. It's now gone. There is certainty that who is coming in for the US administration or US presidency. That actually helps take away the uncertainty, and that may open up some more investment from some of these companies, some of these verticals who is doing well. But as the other point of view, what we want to bring is all analysts and all the economists who have analyzed about the US economy, they still feel that US economy has a high inflation, and they are expecting the inflation not to come down in the near future. So that can be a challenging. So retail may take a much longer time to come back, and high tech, we expect it to bounce back in maybe a quarter or two later, because once the certainty on the political certainty and Fed rate comes down, probably more capex investments will happen in high tech. So at present, we believe that BFS and healthcare will continue to do well,
and high tech may bounce back in a couple of quarters. Retail will take a little longer time because of the inflation pressure they have. तो अलग अलग वर्टिकल्स का अलग अलग आउटलुक है भाई, सीधी बात। ट्रम्प साहब हो ना हो, और अभी ट्रम्प साहब की पॉलिसीज वगैरह देखना पड़ेगा किस तरह की सामने आती है। अच्छा, इस क्वार्टर में इंटरनेशनल बिजनेस के मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स घटे। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो जूनियर लेवल के वेज हाइक्स लेने थे शायद आपको, दूसरा आपने कुछ लार्ज डील्स बैक करी थी, आई एम अज्यूमिंग उसके रैंप अप पे भी खर्च हो रहा होगा, आप तो सीएफओ साहब हैं। तो मार्जिन्स पे ये नॉक क्यों, और फिर मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी आउटलुक कैसा, क्योंकि अब वो मिडिल और सीनियर लेवल के वेज हाइक्स भी आने और सीजनली चैलेंजिंग समय भी आना है आप लोगों के लिए? Yes, that's a good question. Yes, we will have a near-term challenges because in Q2 we had almost 1.1% impact on because of salary increase, and the last deals also added to the pressure on the margin. However, we have operational improvement which was contributing almost 60 basis points. Hence, the drop in the margin was only 50 bips between Q1 and Q2. We expect salary increase and the investments in the large deal will continue in Q3, and hence the margin outlook is muted. We will, but what we are expecting is Q4 will be a better margin. Margin will start improving in Q4, and probably by Q1 of next year we will reach the low 20s level. That is our current expectation, and that is the outlook we have also articulated for this quarter as well as for this financial year and next year when we will reach the low 20s EBITDA margin. तो दो सवाल रह गए। एक तो इस बार मैंने ऑब्जर्व करा आपकी डिलीवरी के हेड काउंट्स में जंप 322 जुड़े, मतलब 5.5% के आसपास डिलीवरी हेड काउंट बढ़ा। अब एक समय था जब आईटी कंपनीज को बंद करते थे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोग जोड़े उतना अच्छा रोबस्ट आउटलुक। ये बेंच क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग? धंधा ज्यादा आ रहा है या फोर्स ही कर रहे हो धंधा अच्छा आने वाला है? पहले याला No, this headcount addition, we continue to be positive because the pipeline is strong, order book is strong. We have been reporting strong book to bill of 1.23x for the last 2-3 quarters. We believe that we need to add the headcount at present, and so that to optimize the cost and improve the margin. We are one of the very few companies who have honored all the campus hire, whatever we have done last year, we have honored it fully. And we will continue to do campus hire this year also to moderate the average resource cost. So the ARC, we are monitoring through campus hire, and we are also hiring people for lateral level, and the hire will continue, and we believe that our revenue momentum will improve in Q4 and Q1 of the coming quarters. एक लास्ट सवाल, आपका अब गोल हो गया FY27 तक $1.5 बिलियन के रेवेन्यूज। थोड़ा शायद धक्का देना पड़ा उस गोल को। अभी FY24 एंड में अपन 1 बिलियन पे खड़े थे, तो 3 साल में मतलब 14.5% CAGR अचीवेबल है। पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हो आप लोग, और क्या इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि बैलेंस शीट में है 500-600 करोड़ रुपए तो दिख रहे थे मुझे लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद, तो क्या इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के थ्रू इस टारगेट को अचीव करने का मन है क्या? Originally, for the 1.5 billion, 1 billion will come from domestic business and $500 million will come from international business. That's our original plan. When we announced this 1.5 billion, we were not planning for any inorganic growth. However, now in the international business, considering the current market situation and the challenges we are facing and uncertainties we are facing in the market, we may require an acquisition to be done next year or so. Maybe 50 to 60 million kind of acquisition may be required for us to reach the number. And we are looking out. Always we have mentioned that inorganic growth is part of our strategy. We continue to look in for opportunities in the inorganic space. With this, with the correct company, the strategically fit company is comes up for us. We will definitely consider that. से डिटेल में चर्चा भी करेंगे। जगन्नाथन सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सब कुछ समझाने के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, SBI सिक्योरिटीज का क्या कॉल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक सोनाटा सॉफ्टवेयर ने काइंड ऑफ एक फ्लैटिश नंबर रिपोर्ट किए हैं। और एनीवे मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रहा था मैनेजमेंट के साथ, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसमें जो लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है
जहाँ मैनेजमेंट ने कहा है कि 13 से 15% केगर ग्रोथ अगले 3 साल में देखेंगे, आई थिंक मैं वहाँ फोकस करना चाहूंगा रादर देन लुकिंग एट क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर। बट अगर मैं ये सब फैक्टर को डिस्काउंट करता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन अभी लुकिंग एट अ ग्रोथ रेट थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। तो हमारा यही व्यू रहेगा कि इसका जो फेयर वैल्यूएशन है तकरीबन 18,000 करोड़ का मार्केट कैप की वैल्यू बनेगी, और आज के डेट में 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मे बी बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी विद एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ मे बी 10 to 15% फ्रॉम ईयर ऑन एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 6 to 12 मंथ।